Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss the cardiac cycle as well as the mechanism of heart excitation and contraction. So let's move to the classboard. Lecture 14.7. So dear students, cardiac cycle. In science, cycle, it is a process which starts from where it ends. जहाँ से कोई process end हो वहीं से दोबारा start हो जाए तो ऐसे process को cycle कहा जाता है. उसी के नाम से है ये cardiac cycle, यानी कि basically it is the sequence of events. The sequence of events during one complete heartbeat. एक हार्टबीट के दौरान जितने भी वो इवेंट्स होते हैं उनका जो सीक्वेंस होता है उसे कहते हैं, it is called cardiac cycle. And now its stages. So there are three distinct stages of one heartbeat or one cardiac cycle. There are three distinct stages of one heartbeat or cardiac cycle. So that is number one, cardiac diastole, or this is the relaxation stage. So dear students, this is the first stage of cardiac cycle. During this stage, the walls of atria, both atria, means left and right atria, and ventricles are relaxed. जब ये relaxed होंगे, so allowing blood flowing in both atria. तो दोनों एट्रिया के अंदर उस वक्त ब्लड जो है वो फिल हो रहा होगा, इसलिए इसे रिलैक्सेशन स्टेज कहा जाता है. या फिर सिंपल हम डायस्टोली को डिफाइन करें
It is the phase during which when the heart muscles are in relaxed state. That is called as diastole. Clear? और जहाँ तक बात इसके ड्यूरेशन की, कार्डिक डायस्टोल, its duration, the duration lasts for 0.4 second. Clear? Now the second stage is atrial systole. Atrial systole. Systole कहा जाता है, dear students, the state when the muscles of the heart they are in contraction. जब वो contract कर रहे होंगे तो उसे systole कहा जाता है. So during atrial systole, both atria, means right and the left, contract simultaneously and pushing blood into ventricles. तो it means यहाँ पर the tricuspid and bicuspid valves are open. जिस वो लम्हा जिसमें इन्होंने ब्लड जो है वो पंप करना इनटू द वेंट्रिकल्स, उस लम्हे ये दोनों जो वेंट्रिकल वॉल्व्स हैं ये ओपन होंगे ड्यू टू द प्रेशर. और ड्यूरिंग एट्रियल सिस्टोल द प्रेशर इन एट्रिया इज ग्रेटर देन वेंट्रिकल्स. वेंट्रिकल्स में प्रेशर कम होता है, एट्रिया में प्रेशर ज़्यादा होगा ब्लड फिलिंग की वजह से. सो दैट इज़ वाई द ब्लड इज पुश्ड इनटू द atria, into the ventricles. Okay, and the third, and how much it lasts? Its duration is 0.1 second. Okay, the atrial systole. Now the third stage is the ventricular systole. So during ventricular systole, systole किसे कहते हैं? The state during which the muscles of the heart they are in contraction form. जब contract कर रहे होंगे, when the muscles of the heart are contracting, that very state is called as systole. So ventricular systole का मतलब है कि जब ventricles contract करेंगे. Clear? During this stage, ventricles contract and pushing or pumping blood into. तो जब ventricles right ventricle contract करेगा तो blood कहाँ पर जाएगा dear students? Into the pulmonary trunk, into
पल्मोनरी ट्रंक और वहां से कहाँ जाएगा, टू द पल्मोनरी आर्टरीज, राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज, डीऑक्सीजन ब्लड। और इसी तरह से लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एओर्टा में एंड एओर्टा रिस्पेक्टिवली। क्लियर? अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो तब सेमिलुनर वॉल्व्स ओपन है इस दौरान, लेकिन यहां पर जो ट्राइकस्पिड और बायकस्पिड वॉल्व वो क्लोज होते हैं। ठीक है? सो ड्यूरिंग दिस tricuspid and bicuspid valves are closed and first heart sound is produced. First heart sound, which is called lub. Lub. ठीक है? First heart sound lub is produced. अब जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर चुके उसके बाद जो सेमिलुनर वॉल्व्स हैं वो भी क्लोज हो जाएंगे। ठीक है? यानी कि आफ्टर दैट when the semilunar valves, means the pulmonary and aortic valves are closed, जब ये क्लोज होंगे मीन्स के ब्लड फिलिंग हो रही है, the second heart sound is produced. Second heart sound, which is called dub, lub dub. ठीक है? ये साउंड्स होते हैं, lub dub is produced. Clear? And it can be heard. It can be heard or heard by using, तो किससे सुना जा सकता है हार्ट साउंड स्टूडेंट्स? बाय यूजिंग स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप क्या है वो आपने देखा डॉक्टर्स ने, वो जो ऐसे पहनी होती है जिसको हम देसी लैंग्वेज में टूटियां कहते हैं। ठीक है? सो दिस इज अ स्टेथोस्कोप। सो दिस इज नॉन एज द स्टेथोस्कोप। ठीक है? इसके जरिए हम हार्ट के ऊपर रखकर और ये साउंड सुन सकते हैं। फर्स्ट हार्ट साउंड लब, दूसरा हार्ट साउंड है डब। फर्स्ट हार्ट साउंड कब प्रोड्यूस होगा? जब ट्राइकस्पिड और बायकस्पिड वॉल्व्स क्लोज होते हैं तो तब फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगा ड्यूरिंग वेंट्रिकल सिस्टोल। और जब रिलैक्स हो चुके होंगे मसल्स तब ये जो सेमिलुनर वॉल्व्स हैं यानी कि एओर्टिक और पल्मोनरी वॉल्व्स ये भी क्लोज हो जाएंगे, तो उस वक्त जो साउंड प्रोड्यूस होगा दैट इज नोन एज डब, which is the second heart sound, and it can be heard with the help of stethoscope. This is the stethoscope. और ड्यूरेशन की बात करें इसकी, so the duration is 0.3 सेकेंड। तो डियर स्टूडेंट टोटल ड्यूरेशन कितना हो गया ज़रा गौर कीजिए। एक कार्डिक साइकिल का यानी कि एक हार्ट बीट में कितना ड्यूरेशन हो गया? 0.4 प्लस, यानी पहला 0.4, then 0.1, then 0.3, so it becomes 0.8, यानी कि लेस देन अ सेकेंड, एक सेकेंड भी पूरा नहीं हुआ तो हार्ट एक बीट मुकम्मल कर चुका है। एक मिनट में चूंकि 60 सेकेंड होते हैं, तो अगर एक सेकेंड में एक हार्ट बीट होती तो एक नॉर्मल इंसान का 60 हार्ट रेट होता, जो कि आमतौर पर एवरेज पर्सन में ऐसा नहीं होता। एवरेज 70 to 75 होता है। ठीक है? तो वो 70 to 75 तभी बनेगा कि जब एक हार्ट बीट लेस देन अ सेकेंड के अंदर कंप्लीट होगी। सो दैट इज 0.8 सेकेंड्स। तो एक सेकेंड से पहले
एक हार्ट बीट मुकम्मल हो जाती है, एक कार्डिक साइकिल कंप्लीट हो जाता है, फिर दोबारा यहीं से दोबारा वो फर्स्ट स्टेज, देन सेकंड एंड देन थर्ड, ये ऑन एंड ऑन चलेगी। क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड एज द कार्डिक साइकिल। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, एक चीज इंटरेस्टिंग बताता चलो, फिर आगे मूव करते हैं। हार्ट साइज होता है क्लेंच्ड फिस्ट के बराबर। क्लेंच्ड फिस्ट, जितनी भी एज हो किसी भी इंसान की, तो उसकी बंद मुट्ठी के बराबर उसके अप्रोक्सीमेटली हार्ट का साइज होता है, एक नॉर्मल इंसान के बंद मुट्ठी के बराबर, क्लेंच्ड फिस्ट। ठीक है? और अगर एक इंसान जो है वो जिंदा रहता है तकरीबन 60 से 62 साल, तो उसकी इस लाइफ के दौरान जो हार्ट अनस्टॉपेबली 2.5 बिलियन टाइम्स हार्ट बीट करेगा। ठीक है? एक इंसान की, एक एवरेज इंसान की जिंदगी में जिसकी उम्र 60 से 62 साल होती है, तो विदाउट स्टॉपिंग इतना हार्ट जो है वो वर्क कर रहा है, ये थकता नहीं है। पहले भी आपको बताया था कि हार्ट के मसल्स नहीं थकते। नाउ द मैकेनिज्म, सो स्टूडेंट्स, मैकेनिज्म of heart excitation and contraction तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कि हार्ट जो है वो किस तरह से कंट्रोल किया जा रहा है, इसकी जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है किस तरह से हो रही है, किस तरह से ब्लड जो है पंप किया जा रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक रफ डायग्राम ऑफ हार्ट। In order to understand the mechanism of heart excitation and contraction, the pulmonary trunk,
So dear students, over here there is present at the upper part of the right atrium, there is present a node and another node at this level. And here the fibers providing the atria, both atria, and from this arises another excitable fibers. So listen very carefully. This is the left atrium, and the left ventricle, and this is the right ventricle, and this one is the right atrium. Clear? And this structure, ये जो आपको पिंक कलर का नजर आ रहा है, this one, this is known as SA node, or also known as sinoatrial node. Clear? And this one, this is known as atrioventricular node, or AV node. Clear? And this is bundle of His, and this is the left bundle branch, and this one is the right bundle branch, and these fibers जो ऐसे पीछे की तरफ मुड़ रहे हैं, these are known as the Purkinje fibers. Purkinje fibers. तो dear students, ये actually excitation और contraction को control करेंगे, ये सारे इसकी nerve supply. So dear students, SA node, it consists of diffusely oriented cardiac muscle fibers possessing few myofibrils and few nerve endings from autonomic nervous system. Clear?
सो दिस इज़ द एसए नोड और साइनो एट्रियल नोड, और यही बेसिक इस नोड को नेचुरल पेस मेकर भी कहा जाता है, नेचुरल पेस मेकर ऑफ द हार्ट, बिकॉज कि ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस सेंड करता है इस पूरे हार्ट को, और कंट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो स्टार्ट इसी ने करना है, कंट्रोल भी इसी ने करना है, ठीक है। और यहाँ से फिर ये फाइबर्स निकलेंगे जो दोनों एट्रिया के ऊपर फैल जाएंगे, एंड इट सेंड्स impulses to both atria and cause simultaneous contraction of both atria। दोनों एट्रिया साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट करेंगे जब ये इम्पल्सेस यहाँ से फैलेंगी। और इसके कुछ फाइबर्स जा रहे हैं यहाँ पर एवी नोड पे, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड ये थोड़ा सा नीचे वाली साइड पर इंटर एट्रियल जो सेप्टम है वहाँ पर मौजूद होता है, एंड ये इम्पल्सेस यहाँ पर आएंगी। एट्रियोवेंट्रिकुलर जो नोड है यहाँ से इम्पल्सेस जाएंगी बंडल ऑफ हिस में। यहाँ से बंडल ऑफ हिस आगे दो ब्रांचेस में डिवाइड कर रहा है, लेफ्ट बंडल ब्रांच जो लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ जाएगी, और राइट बंडल ब्रांच जो राइट साइड ऑफ द हार्ट की वेंट्रिकल्स की तरफ जाएगी। ये राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट बंडल ब्रांच आगे जाकर मज़ीद सब डिविजन्स देती हैं, उनको कहते हैं परकिंजी फाइबर्स। सो इस डायरेक्शन में नर्व इम्पल्स फ्लो करेगी। जब यहाँ से एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर चुके होंगे तो इस पॉइंट से एसए नोड से एवी नोड तक पहुँचने में देयर इज़ अ डिले ऑफ 0.15 seconds while the impulses यानी कि nerve impulse reaches the AV node। उसकी रीज़न इतना डिले इसलिए रखा गया है ताकि ये एट्रिया मुकम्मल तौर पर कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हों और आगे वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड फिलिंग हो चुकी हो। तो तब जाकर यहाँ से जब मैसेज जाएगा, यहाँ से बंडल ऑफ हिस, देन राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस, देन परकिंजी फाइबर्स, यहाँ तक मैसेज पहुँचेगा, देन द वेंट्रिकल्स विल कॉन्ट्रैक्ट। सो दिस इज़ द एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट। तो मैसेज एसए नोड से एवी नोड तक, लेकिन यहाँ से इससे पहले मस्कुलेचर तक पहुँच चुका है ऑफ द बोथ एट्रिया, वो साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं, और यहाँ से यहाँ पहुँचने में 0.15 सेकेंड्स, इसको MCQs के लिए भी मार्क कर लें, डिले है, ताकि ये एट्रिया मुकम्मल तौर पर कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हों और ब्लड जो है वो वेंट्रिकल्स में जा चुका हो। वहाँ से फिर आके ये मैसेज जाएगा और फिर आगे वेंट्रिकल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। लेक्चर 14.7 एक्स्ट्रा। सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे ECG और इसके साथ थोड़े से और टॉपिक्स। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।